When you are in a bad luck prevails, right? Unfortunately, positive. हेलो बोंजो ओला नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नितिज अग्रवाल, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एंड आई एम अ cabin crew. सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द घोस्ट मोमेंट. एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत दिन से रह रहा हूँ ना, तो मेरी चेयर को भी पता चल गया है, मेरी रग रग से वाकिफ हो गए. सो वो मेरे डायलॉग्स चुराने की कोशिश कर रही थी. सॉरी गाइस, सॉरी. एनीवेज गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है नितिज अग्रवाल एंड आई एम अ कैबिन क्रू. एंड आई होप इस कोरोना के टाइम में आप सब लोग सही सलामत हैं, सुकून में हैं, एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. ओके, सो मैं आप लोग के सामने 2 महीने बाद आ रहा हूँ, आई गेस, एंड आई फील वेरी गुड अबाउट दैट. हाउएवर आई ऑल्सो फील सैड दैट मैं इतने टाइम से नहीं था, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि मैं अभी 2 महीने से क्या कर रहा था एंड राइट नाउ किस सिचुएशन में हूँ. ओके, बट मूवी स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एम्स्टर्डम का एक व्यू देख लीजिए. मेरे जो होटल से मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है? अभी कॉफ़ी बना के आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ. Guys, I'm back after making a coffee which you guys already know. मेरे को बहुत पीना पसंद है, ठीक है? आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्या स्टूपिड सा गॉगल पहन रखा है, बट दिस इज बेसिकली नॉट स्टूपिड गॉगल्स. ये मेरे काम के गॉगल्स है, जब मैं फाइनली जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई नवंबर में. एक सेकेंड, उतारूं के पीऊं? एक सेकेंड, मैं पहले पीता हूँ. झाग नहीं आ रही, आई मीन झाग कह रहा हूँ, भाप नहीं आ रही, बट इट्स ओके, बट इट्स अनकम्फर्टेबल, सॉरी. सो जब मेरा ट्रेनिंग शुरू हुई नवंबर में, मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई, उसके बाद आई स्टार्टेड फ्लाइंग. तो मेरे को पता चला कि मेरे को ऑन बोर्ड ये पहनना पड़ेंगे चश्मे एवरी डे ऑन एवरी फ्लाइट, जहाँ पे भी जाऊँ, चाहे छोटी फ्लाइट है चाहे लंबी फ्लाइट. बट इट वॉज एन इनकन्वीनियंस, बट स्टिल वी हैव टू डू इट because of the safety and precautions regarding coronavirus. So एंड देन उसके बाद मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था. दिसंबर में आई स्टार्टेड माई सोलो फ्लाइट्स, एंड देन मेरे पास ऑफ्स भी थे, मेरे पास अच्छी अच्छी फ्लाइट्स थी. मैं 25th को ऑफ पे था, एंड ऑन 31st आई वाज सपोज टू गो टू मालदीव्स. माले या लाइक मेरा न्यू ईयर मालदीव्स में बनता, बट द थिंग इज मैं किसी एक पुरानी फ्लाइट की वजह से, जिसपे कोई बंदा कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो उसकी वजह से मेरे को होम क्वारंटीन पे रहना पड़ा 3-4 दिन. एंड देन उसके बाद वो मेरी फ्लाइट कैंसिल कर दी. एंड देन उसके बाद ऑन 31st of December दे गिव मी दिल्ली टर्न अराउंड, नॉट इवन अ लेओवर, दे गिव मी दिल्ली टर्न अराउंड. वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ भी मेरे को बोल रहा था कि सर बैड लक. मैंने कहा आई नो ब्रो, आई नो. सो उसके बाद बट ये पूरे टाइम में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बिकॉज आई थॉट आई एंजॉय दिस मंथ मेरे साथ. एंड फ्रॉम जनवरी, फ्रॉम माई फर्स्ट फ्लाइट आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज. तो मेरी जो जनवरी की फर्स्ट फ्लाइट थी, दैट वाज ऑन 5th, लाइक दोहा टू एम्स्टर्डम and layover, then Amsterdam to Doha, 2 hours on ground, then Doha to Dhaka, then layover, then Dhaka to Doha, back on 8th. Like 4 days, 5th to 8th, but amazing like places, Dhaka and Amsterdam. But when you are in a bad luck prevails, right? So like मैं 5th को आया, 5th की शाम को मैं थोड़ा बीमार पड़ना शुरू हो गया, and by the night I was like going through hell. But still I took a paracetamol, and like I was like okay, let's see until tomorrow morning. तो कल अगले दिन मैं उठा, and I was like I had fever and everything, so I reported sick. Amsterdam में I reported sick, and उसके बाद मेरा कोरोना टेस्ट हुआ, I mean PCR टेस्ट हुआ, and I unfortunately tested positive, and that is why I am still here in Amsterdam. किसने सोचा था मैं एम्स्टर्डम आऊंगा? Such a beautiful country, such a beautiful place, but I'll be stuck in the hotel. Fuck. I'm sorry for the language, guys, but I'm pissed off about that. Anyways,
the last thing that I need to tell you guys is that coming Wednesday को मेरा again दोबारा टेस्ट होगा, जिसमें कि I wish, I hope and I ask you guys also to pray for me that मेरा उसमें जो result आए that comes out to be negative, so that I can go back to Doha, right? Because I don't want to stay here for long, even though in a very convenient environment right now, but still I want to go back. I want to start flying again. So yeah, that was all that happened. And and हाँ, एक चीज तो मैं बतानी भूली कि मैंने अपना ट्रेनिंग शुरू करने से पहले I had like waited for 1.5 months to get started with my training. That was a huge time. Yeah, so मैं 28 September को आया था, and my training started like somewhere in November, and I started my flights after 20th of November. So you can imagine such a long wait for the training, right? But the training duration was short, so it was okay. So that was all for today's video, guys. And if you guys liked my video, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा, आप लोगों को I know this was not a very huge or great content for this video, but ये भी बताना आप लोगों को ज़रूरी है. तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, then please hit the like button, subscribe to my channel, जिससे आप लोगों को अच्छे कंटेंट के बारे में पता चलता रहेगा. And also comment down below in the comment section whatever you think about the video, whatever your thought processes are, and if you want to say anything to me personally or publicly, feel free to do it in